Hello everyone, I welcome you all to today's episode of KNYA Voice. Today we have with us a very special guest who I think needs no introduction. You all must be knowing the Rakshita Singh. So basically Rakshita Singh, who is currently a third year medical student, and after that there's a lot of things. She's a YouTuber, she's an educator, she is also someone who have inspiring a lot of people. Also she has been featured in the Josh Talks. So I welcome Rakshita here on this platform, and we have a privilege that you will share your experience to all the juniors. First of all, thank you so much for inviting me. I'm so grateful. And आपने एक साथ आते ही इतना तारीफ कर दिया, मतलब एक साथ इतना तो मैंने कभी सुना ही नहीं है कि शुरू होके. But yeah, well, I'm just figuring out क्या करना है लाइफ में, and I'm like just a random girl trying to do जो भी मुझे पसंद है every day. That's it. That's all. Right, definitely. So in fact that's the reason that you are trying to figure out has lead to many more opportunities for you as well. So guys, in today's podcast our mission will be the same, to connect with you how Rakshita Singh she encounters all these technicalities and differences, and how she maintain the right balance. And before we begin with the podcast, a little about KNYA Med. So KNYA Med is on a mission to celebrate medical professionals. Our aim is to provide medical professionals with all the comfortable apparels, right from scrubs, aprons, so that whenever you are in your hectic duties, you need not to worry about that particular aspect. So let's begin with the podcast. I'm sure many people are, wanting to know your journey. So basically, Rakshita, once you started your YouTube channel, I think primarily you started with YouTube. So whenever we start something which is very separate from the normal population, say of medical student or something, so one thing, how did you got that idea? And once you started and once it started growing, how did you maintain the balance right now? So basically, both of my parents are into this teaching and all. My dad is a principal and my mom was a teacher. Abhi she left. So बचपन से ही I was that girl कि छुट्टियां हुआ, exams खत्म हुआ, उसके बाद I'll take out my notebooks and I'll check my own notebook and I'll pretend that I'm the teacher and all. तो मुझे ना हमेशा से वो था कि हाँ teacher बनना है. ऐसा नहीं कि teacher बनना है, but I like that thing. So when I got into MBBS, मेरा AIQ seat था. I got a college in West Bengal. And इधर आके initially मेरे उतने friends नहीं बने. So उस time पे I had like two options. Either I should start texting my old friends, or I should just work on myself. I should try to do something which can help me in a long run, और मेरा खुद का मुझे improve कर सकता है. तो आई थॉट ठीक है, मुझे क्या आता है, मैं क्या कर सकती हूँ. तो आई अप्लाइड ऑन अनअकैडमी टीचिंग के लिए. So YouTube was actually not the first step. Unacademy was the thing. But a random 19-year-old girl applying for Unacademy, you can't expect ना कि Unacademy वाला will be like हाँ आ जाओ हमारे पास आके पढ़ा लो. तो so कोई मुझे रिप्लाई नहीं आया, कुछ नहीं आया. ट्राइड अ लॉट, मैंने पूरा खुद से नोट्स बनाया, दिस एंड दैट, अच्छे से लेक्चर प्रिपेयर करके डाला, बट नो रिप्लाई, नथिंग. देन आई वाज लाइक ऐसे तो नहीं चलेगा, अब क्या करूं मैं. तो फिर मैंने YouTube पे देखा कि कैसे बन सकते हैं, टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता है. तो इधर यू शुड हैव एक्सपीरियंस, और यू शुड बी समवन हु डू हैव ऑडियंस. सो एक्सपीरियंस तो आई एम अ 19-year-old गर्ल, राइट. मुझसे ज्यादा तो लोगों को एक्सपीरियंस होता है जितना मेरा एज है. तो आई थॉट ठीक है, वो तो होने से रहा. सो आई शुड फोकस ऑन दिस थिंग कि ऑडियंस मेरे पास कहाँ से आए. दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल. एंड उस टाइम पे मैं घर पे थी. हम लोग का, मुझे उस टाइम पे हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई दोनों हो गया था, जिसकी वजह से मुझे घर जाना पड़ा था. एंड मेरे साथ ऐसे होता है, उस टाइम पे कुछ नहीं करने दे रहे थे, इधर उधर बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, कुछ नहीं करने दे रहे. तो फिर मेरा दिमाग चलेगा ही चलेगा कुछ ना कुछ करने के लिए. दैट्स व्हाई आई थॉट कि ठीक है कुछ तो करते हैं. यूट्यूब पे मैंने मम्मा को बोला आप ये फोन पकड़ के खड़े हो जाओ. एंड मेरी मम्मा ने पकड़ के खड़े. माय मॉम इज आस्किंग क्या कर रही है तू, अरे आप पकड़ो तो, रुको तो, सुनो तो आप. एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग. मुझे एक ही चीज आती थी, जस्ट रिसेंटली नीट क्लियर किया था, यही आता था कि हाउ टू क्लियर नीट. तो आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट थिंग ओनली कि ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया. एंड बिना सोचे समझे, बिना पेरेंट्स से पूछे, बिना कुछ, आई अपलोडेड दैट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल. एंड जैसे ही वो वीडियो अपलोड हुआ, वो पूरा मेरे कॉलेज में शेयर हो गया. And everyone started trolling me, like 200-300 negative comments. अच्छा TED talk दोगी तुम YouTube पे खड़ी होके, this and that. फ्रेशर्स भी नहीं हुआ था, एक भी सेमेस्टर भी नहीं हुआ था. फिर मेरा एकदम से
हो गया कि अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट काफी सारे सीनियर्स थे, दे सपोर्टेड, दे हेल्प्ड, एंड या उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा सा रुक जा, एक सेमेस्टर पास कर ले। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पता ही है, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलमोस्ट सब फेल होते हैं, बट लाइक आई समहाउ लाइक मैनेज टू पास, लाइक 200 में से 33 स्टूडेंट्स को एनाटॉमी में पास किया था, एंड आई पास। तो इतना मुझे फिर किसी ने कुछ बोला नहीं, एंड आई स्टार्टेड दिस थिंग, एंड 13,000 सब्सक्राइबर्स कुछ थे। उसके बाद कोरोना स्टार्ट हो गया, एंड वहां पे थोड़ा और टाइम मिल गया फिगर आउट करने का, और खाली टाइम मिल गया, एंड व्हेन आई केम बैक आई हैड लाइक 88,000 सब्सक्राइबर्स कॉलेज आने से पहले। एंड या उसके बाद से कोरोना ने काफी हेल्प किया, बट उसके बाद वो आदत बन गई। अब ऐसे होता है, वो चीज ना करो तो ऐसे लगता है अरे समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। सो टीचिंग इज लाइक अ स्ट्रेस बस्टर टू मी। फॉर एग्जांपल पीपल से नो कि वी स्लीप जब भी स्ट्रेस होता है, वी रीड नॉवेल्स जब भी स्ट्रेस होता है, टीचिंग इज लाइक दैट थिंग फॉर मी। अगर मैं 1 घंटा पढ़ा लूंगी तो माय मूड विल बी लाइक दिस। सो या दैट्स इट। Right. Definitely. So this is something a very crucial message. Like she said that her hobby was sort of teaching, but at the same time, if you strike the experience, तो 19 year का तो लोगों का experience होता है, but at the same time you can't wait 20 years more down the line to start teaching something. So this is what even if you start at a low level, whatever level, if the audience will connect, then obviously you can grow very well. So that's the perfect message that I think anyone can start at any age they feel comfortable. Now on the similar note, like for you directly said that it is a stress buster for you, but sometimes do you think that you feel a little bit distracted, because obviously if something is enjoyable, then why would you like to study, and instead you would like to do that thing? So how do you maintain that distraction ki nahi yaar, aaj I have to do 1 hour of this task, and then rest time maybe I can do something else? लाइक फॉर श्योर बहुत बार दिमाग में आता है कि इसमें तो मेरा दिल लगता है, आई एम बेस्ट एट इट, लाइक आई शुड जस्ट फॉलो दिस पूरा फुल टाइम। एंड ऊपर से ट्रेंड चला हुआ है आजकल तो सब यूट्यूबर्स का ड्रॉप आउट फ्रॉम कॉलेज, ड्रॉप आउट फ्रॉम कॉलेज। तो बट वहां पे मेरे को ना बस एक ही लाइन मेरे दिमाग में घूमती है, what I am today is cause I had the tag of MBBS. Right. मेरा चैनल अगर किसी ने देखा, कुछ भी देखा, वो इसलिए देखा बिकॉज मैंने एक एग्जाम क्लियर किया था, मेरे पास वो एमबीबीएस का टैग था। एंड अगर मैं उसी प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं दे पाऊंगी तो आई डोंट थिंक सो कि मैं किसी भी प्रोफेशन के साथ जुड़। सो दैट्स द ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर और लाइन व्हिच लाइक कीप्स मी गोइंग। Right. Yeah, definitely. So in fact, that's the only thing that what the reason you are today is basically that, so you can't disrespect that. And also medical students make jo bond wala factor hota hai, that's the reason also that many students can't think of dropout as such also. So I think that's a particular check-in case. So now once you started, you told that your college everyone got mixed reaction. So now from that day to till today, I think you are having 2 or 3 batches of juniors. Now many people joining the college might know that okay, this college is where Rakshita studies. Many juniors might be looking forward to meeting you. So now how's the outlook that if some juniors come to you that ma'am, I want to start my YouTube channel, how will Rakshita Singh inspire him or her? Like no one asked me about this key I want to start this YouTube channel, because I'm like fine here, I'm talking बहुत ढंग से. When it's like professional thing, I am an extrovert. If you'll talk professional things and कुछ भी काम से related बात होगा, I am extrovert. But if you'll come to me in person, if you'll try to talk to me ऐसे बहुत I am the biggest introvert you'll ever meet. I'm actually the biggest introvert you'll ever meet. मतलब medical college में थोड़ा सा seniors being bossy on the juniors and all ये सब चीजें होती हैं, but actually अगर मेरा junior था तो they'll be bossy on me. I मतलब I'm not that person जो कभी भी किसी junior को आज तक कुछ बोला है. So अभी recently fest था, fest में 4 दिन था. In fact I sponsored my fest. But I went fest में सिर्फ 2 घंटे के लिए. That's all. I am इतना बड़ा introvert, and a few juniors came to me and they were like 1.5 साल हो चुका है हमें इस कॉलेज में, फर्स्ट टाइम हमने आपको देखा है, we just want like a picture and all. तो it feels good. अब इतना किसी ने आके नहीं पूछा, but अगर कोई मुझसे ऐसे पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि we want to start a YouTube channel or something, so I just say one thing: if you are starting something, so don't do it for money. कुछ लोग मेरे साथ मुझसे पूछे हैं कि YouTube स्टार्ट करना है हमको, एंड इनिशियली जब वो स्टार्ट करते हैं तो देयर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अच्छा हमको स्टार्ट करना है, इतने व्यूज का कितना पैसा मिलता है. मनी
should not be a motivating factor. मतलब वो सबसे घटिया चीज होगा. And trust me, if money is the motivating factor to start something, you are not going to do well, because YouTube is a thing जिसमें हो सकता है एक महीना you'll be doing so good and next month आप कितना भी अच्छा वीडियोस डालो आपका व्यूज नहीं आ रहा है. You are trying hard, you are trying a lot, but views नहीं आ रहा है. उस टाइम पे if you don't love that thing, if you are doing that thing just for money, you won't be able to like maintain the consistency. So हमेशा जो भी करना है वो ऐसे सोच के करना है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं. I was a 19-year-old girl. मेरे घर में मेरे पापा ऑलरेडी कमा रहे थे, उस पैसे से मेरा घर चलता था. मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था. मैंने दनादन अपनी लाइफ में रिस्क लिया है, दनादन अपनी लाइफ में रिस्क लिया है. तो ये सोच के करो मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, ना से अच्छा कुछ सही कुछ करके देख लेते हैं. एंड हर किसी के दिमाग में रहता है कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे. कल कभी नहीं आता. इफ यू वांट टू स्टार्ट, बंद कर दो इस वीडियो को, इनफैक्ट पूरी भी मत देखो, यही बंद करके अच्छा बनाते हैं, अभी जाके बनाते हैं, तभी हो सकता है स्टार्ट. फॉर एग्जाम्पल मतलब मेरा दिस जिम वाला थिंग वाज नॉट हैपनिंग. इट वाज लाइक सिंस पास्ट 6-7 months I was just thinking कि नहीं I want to go to gym, I want to go to gym, I want to go to gym, I want to work out. And like few days back one of my friends and he was like कि if you want to start चल अभी 5 मिनट में तैयार हो, चल अभी. I was like are you sure, are you kidding me? मतलब मेरे पास कुछ कपड़े नहीं है, मेरे पास शूज नहीं है, मैं वो सब बहाने दे रही हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं. If you want to come अभी. I actually went. First day I didn't like it much. Second day I was like ठीक है fine. अभी काफी कुछ दिन हो गए हैं, अभी I actually like it. And they were like कि ठीक है तू वीक में 4 दिन कर ले, अभी इनिशियल टाइम है. And अभी I'm in a stage I was like नहीं 4 दिन नहीं 6 दिन. So start now. If you want to start something, start now. Right, definitely. So this thing is something which is very generalized, right from starting YouTube or any other hobby. You should always be willing to start now with whatever facility you have. Then maybe you can better it in the future. Definitely. So now, Rakshita, if we think about your future plans, so as of now, you might not be, confirm कि यही branch लेना है या जो भी you want to do. But do you have something in mind that this is what I wish to pursue or something like that? Even ऐसा कुछ विश हो भी तब भी मतलब रैंक ही डिसाइड करता है क्या मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा. सो जिंदगी से इतना एक्सपेक्टेशन रखने का कोई फायदा नहीं है. मैं बहुत कम एक्सपेक्टेशंस के साथ चलती हूँ. कम से कम एक्सपेक्ट करो, खुश रहो, दैट्स ऑल. बट फिर भी अगर कोई पूछता है तो आई वांट लाइक अगर कोई कहता है ले फ्री में दे रहे हैं तेरे को सीट, तो आई वुड लाइक लिटरली गो फॉर डर्मा और रेडियो. Right, definitely. So I think the balance shall continue soon. So now we would like to have a small rapid fire so that students can have something which is very different from general experience. So Rakshita Singh ka biggest Viva blunder. Viva blunder, like a blunder तो नहीं था, but that was a bad experience. Like recently I had my this आई का exam. And मैं ऑप्था का स्पेलिंग ही गलत लिख के चली गई. तो सर saw my that paper and he was like अच्छा oh this is sorry sir. उसके बाद he asked me then I was like sir my patient is this. I was like ठीक है tell me the provisional diagnosis. So I was like sir my patient is suffering from senile cataract in both eyes. I don't know सर ने इतना दिल पे क्यों ले लिया. मैंने immature नहीं बोला, मैंने जो senile cataract in both eyes बोल दिया. सर ने दिल पे ले लिया and सर ने get up सर इतना. एंड उसके बाद he was like next Wednesday आना. मतलब सर दिवाली है, सब बुकिंग कर लिया सर, फ्लाइट का बुकिंग कर लिया सर, घर में पैसा नहीं है सर प्लीज जाने दो सर. एंड देन उन्होंने एक और नेक्स्ट वेडनेसडे को बोला. फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ. बट या दैट वाज लाइक ऑप्था में एच लगाना भूल गई थी. Right, definitely. So first piece of advice, know the subject spelling. Right. At least the spellings. Right. So one advice for first year MBBS students starting right now. Only one. Starting right now. Don't rush. And ये मत सोचो कि अभी से सब कुछ मुझे आज ही वो कर लेना है. आज से ही मुझे फाइनल ईयर का भी पूछ लेता हूँ भैया से, अभी क्या पढ़ना स्टार्ट, क्या अभी भी सेकंड ईयर का पढ़ना स्टार्ट. जिस साल में हो जो हो उस टाइम पे बेस्ट हो. दैट्स इट. ऐसे आगे भागो कि एडवांस का कर लेता हूँ, जो है उतना कर लो. एंड अगर आप लाइक काफी दिन हो चुके हैं, स्टार्ट ढंग से नहीं किया, अभी भी स्टार्ट करो. यू एक्चुअली हैव अ हेल लॉट टाइम.
Right. हमको हमेशा ऐसा लगता है कि मैंने 2 महीना वेस्ट कर दिया, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, 2 महीना हाथ में है, उसमें संभाल लो। Right. Definitely. If you have given the opportunity to give NEET again and to enter the medical field, or maybe do JE or something else, what would you do? Like, I also made that reel. What would you do if you are like, you'll be appearing for NEET again? So not appearing for NEET UG again. Done with it. So yeah, like I don't know what I'll do. Maybe I'll go for pilot thing. I wanted to become a pilot. Amazing, amazing. ठीक है, उसका भी guidance हमको चाहिए रहेगा फिर in that case. So best part about medical college as of now, अभी तक जो भी encounter किया. Apron and stethoscope. I'm still obsessed. I'm the only one in my class who always wears apron now, like always. I can't get over it. Right, definitely. So that's something very great, and we would like to help in the same as well. And what's the worst part about medical college, which you want कि यार change होना चाहिए? Initially अच्छा खासा ग्रुप्स होता है फ्रेंड्स का, बट मेच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज कि वो जो 10 फ्रेंड्स का ग्रुप है वो 2-3 का ही रहने वाला है. तो या Right. आई डोंट नो व्हाई द कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कई बार पढ़ाई से रिलेटेड, बट पीपल नीड टू रियलाइज दिस थिंग कि नीट वाज अबाउट कंपटीशन, एमबीबीएस इज अबाउट लाइक टीम वर्क, हेल्पिंग ईच अदर. बट आई डोंट नो, समटाइम्स लाइक पीपल स्टार्ट फीलिंग जेलस. Right. One thing you want to change about yourself? Gymming तो हमको समझ में आ गया. Anything else? My like overthinking ka adat, me being over emotional. I'm a very emotional person. If I'll see someone crying, I'll start crying. Like few days back, I around 10 or 10:30 I went for a run. Something इधर it's safe, तो इधर ही कैंपस में going for run, and उधर एक कुत्ता का थोड़ा इधर कुछ खावा लिया था किसी ने, and वो रोड पे गिर गया था. And I actually stopped. I was because I have a cat. So I was calling vet 10:30 ke around, and one fellow came, and it was like almost a half an hour or something that मैं उधर ही खड़े हुए थे. तो a fellow came and he was like, it's good that you have इतना emotions, but you are going to become a doctor. So कई बार तुमको decide भी करना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना emotional होना है. जो लोग इतनी ज्यादा इमोशनल होते हैं, they usually don't do उतना ज्यादा good in life. But I don't believe in that thing. मुझे ऐसे होता है कि at least I was able to sleep खुशी खुशी उस रात, कि मेरा 2 घंटा वेस्ट हुआ, 3 घंटा वेस्ट हुआ, but at least I saved someone, I helped someone. तो yeah, but हाँ कई बार वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, overthinking and emotional things. I want to say that. Right. So I think no worries. सबके साथ होता है. Gradually you learn that part also. One message for listeners, if you want to give any particular message, anything. Yeah, to everyone out there, कुछ भी है लाइफ में, पेरेंट्स शुड बी योर प्रायोरिटी. बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, पर अगर तुमको कोई साथ में रहेगा, तुम कुछ भी गलती करके आ जाना, ट्रस्ट मी, तुम्हारे पेरेंट्स फिर भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. मैंने इतनी गलतियां करी है, मेरे लाइफ में इतने लोग आए हैं, मेरी लाइफ से इतने लोग गए हैं, बट एट लास्ट अगर सच में किसी की वजह से हेल्प हुआ है, सच में किसी कुछ कांड करने के बाद कुछ बचे हैं, तो पेरेंट्स ही थे. सो स्टार्ट डिस्कसिंग थिंग्स विद पेरेंट्स. कई बार हम लोग को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड हम अपने फ्रेंड्स को आके इतना अच्छे से बताते हैं, बट पेरेंट्स से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खुद से ही समझ जाए. मेरे पापा ये समझते नहीं है. डिड यू इवन ट्राई टू टेल हिम वंस? एक बार बोल के तो देखो. सो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स से ज्यादा हमको कोई नहीं समझ सकता है. एंड आज का जनरेशन, जो हमारा जनरेशन है, वो थोड़ा सा पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट होता जा रहा है. आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज स्टार्ट टॉकिंग टू योर पेरेंट्स. आई टॉक टू माय पेरेंट्स, लाइक माय डैड, एवरी डे फॉर अबाउट लाइक 1 hour. मेरा पूरा दिन में कुछ बात होता है तो पापा से होता है, और दिन में 5 से 6 कॉल जाता है, तो पूरा घंटा अगर कैलकुलेट करके देखें तो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा, 5-6 कॉल्स में 1 घंटा अप्रोक्स हो जाता है पूरा दिन में. एंड वहां पे मुझे ऐसे लगता है कि वहां पे लाइक आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई डोंट ईट नॉन वेज, आई डोंट डू एनीथिंग. एंड मुझे ऐसे लगता है इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है पापा से कनेक्शन. वो हमेशा वो खींच के रखा कि हाँ देख, हम ये हमारी सच्चाई है, हम यहाँ बिलोंग करते हैं, इवन इफ आई हैव मनी, इवन इफ आई डोंट. तो मुझे है कि हाँ कोई है मेरे पास जो मेरे को हमेशा साथ देंगे.
Definitely. So I think that's really true that, your parents and your families are the ultimate, motivation for everything that you do, and also a guiding light. So thank you so much, Rakshita. I think that was a very well balanced interview in which, students got to know about the fun part as well as what is, really meaningful in the life. So again, thank you so much for sharing your experience, and we hope the audience loved it a lot. Hanjita, and like again, thank you so much for inviting me, and it was like pleasure to be there. And I hope कि I was able to add some values in like people's life. Right. Yeah, that's it. And मतलब अच्छा लगता है कि लोग नीचे कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट लिख देते हैं तो पढ़ते हैं उसके बाद that's actually a like very big motivating factor to work कि Right. अरे आपने ये लाइन बोली and this line changed my life and अच्छा लगता है कि I'm actually able to make कुछ सच में सिग्निफिकेंट चेंजेस किसी के लाइफ में आई डोंट नो वो सच में कमेंट तो सच्चे होते हैं कि झूठे होते हैं बट एटलीस्ट मैं खुश हो जाती हूँ Right, right, right. Definitely. So even virtually, you are changing a lot of lives. So I don't think I need to say this, but if you guys, if you have not followed or you want to connect to Rakshita anytime, so we'll mention all the links of her social handles in the description. So feel free to check that out. Thank you so much, Rakshita, again, and we wish to have more such, inspiring journeys. When you get dermatology seat, then again we'll have one. So all the best for all your ventures, and I wish you all the best.